रिक्वेस्ट करती हूँ, may I request our chief guest Shri Bhupinder Yadav ji, Honorable Minister, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to give his address. Big round of applause. Come on, ड.एस.आई. It's a great day for all of us. Honorable Minister of State, Shri Ashwani Vaishnav ji, Joint Secretary from Ministry of Environment and Forest, Shrimati Manju Pandey ji, Director ड.एस.आई, Shrimati Dhriti Banerjee ji, Director ब.एस.आई, Mr. A. Mao ji, ladies and gentlemen, as the outset, I would like to express my happiness and congratulate the Geological Survey of India for celebrating its 107 year of dedicated scientific service to the nation in exploration, research and documentation of diversity of India. I would also like to take this opportunity to congratulate the winners of Janki Ammal Taxonomy and Taxonomy Awards. As we know, Padma Shri Janki Ammal ji, although a botanist by her taxonomic work of outstanding merit and excellence, particularly in the area of cytotaxonomy, and has been a source of inspiration to many young scientists, and I am sure for generation to come, it shall act as an inspiration. Today all three awardees delivered their keynote addresses, and it was rightly suggested that protection of microbiological health of our nation is important. Definitely, suggestion given by all three awardees are very valuable suggestion for us, and definitely we will take action on that. Before I further go into my address, I would like to remind you all that today, as mentioned by our ड.एस.आई director, is a Rath Yatra day, is a auspicious day for Devi Kali, but today as a marks a very important day in realizing the vision of clean and green India of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Apart from the 107th foundation day of this historical institute, the single-use plastic ban comes into effect from today. This historical step will be instrumental in realizing the vision of plastic-free India. Since independence, ड.एस.आई has played a pivotal role in providing scientific inputs and formulating policy for biodiversity conservation. The studies of ड.एस.आई have helped in establishing globally well-known protected areas such as Silent Valley National Park, Kerala, Nampada Tiger Reserves, Arunachal Pradesh, Nilgiri Biosphere Reserves, and many others. Today, in order to comprehensively document the faunal wealth of the country, ड.एस.आई scientists now have discovered nearly 6,000 new species of animal to science. And definitely, formal director said it is not a joke. Yes, we also feel it is a very serious work, and the nation recognize your work and contribution toward the protection of biodiversity of this country. More than 500 animals have been discovered by scientists from different parts of India, and that is the reason, with the contribution of ड.एस.आई, now overall unique species of 103,000 species of animal are from our country, and that is a pride of our country, and it's a contribution of ड.एस.आई.
covering the entire spectrum of animal diversity across the country. The knowledge generated by ड.एस.आई by prospecting the biodiversity today is providing tangible and intangible economic, social benefits in natural resource sector by supporting the activities in agriculture, fisheries, animal husbandry, forestry and human health. Not only from the conservation and policy making perspective, speaking from legislation perspective too, ड.एस.आई has played an important role in formulating Wildlife Protection Act. Recently we are going to amend it, Biodiversity Act and Biodiversity Rules. The knowledge base of the survey has benefited academics, forest department, conservation policy makers, state and central government and general public. To further capitalize on the knowledge repository and expertise of this primary institute, our ministry has been taking several initiatives to meet the primary objective of conserving the environment. Earlier last month, our ministry organized the Nirantar meeting of 2 days long deliberation between the 17 institute was held. The idea is to how the ministry can capitalize on the expertise and knowledge repository of the respective institutes to further play an effective role in the nation building. ड.एस.आई has been a recognized research center for many universities, and today they also entered into the collaboration with the University of Bengal, and several research scholars have successfully completed their PhD degree. Our focus remains on to adopt the latest approaches and methodologies in research activity resulting in capacity building of our dedicated scientists. The creation of next generation of our young talented taxonomists and conservation biologists is a significant contribution to nation building and future of biodiversity conservation in the country. The priority is to focus on their capabilities so that the institute can adapt in this fast changing time to become the global best. It is very important for us to realize that how we can capitalize on the massive repository of data available with ड.एस.आई as well. For example, the data generated by ड.एस.आई can be used for making decision support system through integration of other leading organizations of the country including the ISRO, FSI, ICFAR, etc. The information generated by ड.एस.आई is very useful in developing conservation and management plan and importantly for scientific validation of our People's Biodiversity Register prepared by biodiversity management committees at village level. The geospatial data of ड.एस.आई will be great importance in developing adaptive spatial planning of conservation areas to combat climate change. The finding of the recent research studies of ड.एस.आई will be useful in forest management as well as support the National Action Plan to combat climate change in India. As we are all aware, India is signatory of Convention of Biological Diversity and other international conventions such as Convention of International Trade in Endangered Species of World Fauna and Flora, Convention of Conservation of Migratory Species of Wild Animals, Ramsar Convention, which primarily focus on biodiversity conventions. In order to meet the objective of given conventions where India is leading at global stage, the significance of taxonomy and taxonomists in biodiversity documentation cannot be neglected. Scientific inputs from taxonomists, ecologists, conservation biologists, sociologists, information technologists, and scholars of other allied disciplines and an interactive collaboration and networking among them will be extremely crucial in achieving the objective of these conventions. Unfortunately, the taxonomic expertise of our country has been
alarming declining in recent time. And there is an urgent need to develop the capacity in taxonomy to cater the need of the hour. Introduction and integration of cyber taxonomy at ड.एस.आई is dissemination of taxonomic information with regard to Indian fauna at a rapid pace and in more efficient way. Friends, climate change is no distant reality and the science has been very categorical about it. On the environmental aspect, the consequence of climate change, a change in distributional pattern of vegetation with species in high elevation ecosystem shifting to higher elevations has already been observed. In order to mitigate the challenge of climate changes, since range shift migration of animals is also very much likely, the distribution of fauna needs to be monitored and periodically analyzed as a priority study. Long-term studies of faunal elements of forest, aquatic, coastal and marine ecosystem are essential to monitor such changes. I feel ड.एस.आई can play a major role in this aspect. I have been told, and I am also glad to learn as a part of Digital India vision of government, the primary biodiversity data generated by ड.एस.आई is being digitized further. I would also like to mention that in order to support the global taxonomy and biodiversity research, ड.एस.आई should aim to complete the digitization of all voucher specimens. We are ready to support them also. The central idea should be that all publication of 100-year running into over 2.5 lakh pages should be made into a user-friendly, searchable data based on with open access. ड.एस.आई should move forward beyond its 107 year of establishment, and it is time for this organization to disseminate the knowledge on biodiversity and make it reachable to the public through outreach activities. ड.एस.आई should strengthen its presence through development of museum on faunal diversity at headquarters in Kolkata and all its regional center located across the country. Friends, the director in her initial remarks already said that they dedicated this to this year for a name like Jeevan Dhara. What I found about the Jeevan Dhara, I found a very beautiful poem that जीवन एक बहती धारा है, किसी सरिता के कलकल सा, किसी मृग समान चंचल सा, किसी निर्बल के संबल सा, इस धारा के अविरल प्रवाह से जाने कितने बिछड़ गए हैं, कुछ डूब गए, कुछ पार हुए, कुछ कहकर आगे निकल गए, ये जीवन कोई दौड़ नहीं, यह जीत तुम्हें सम्मान मिला, जिसने समझा इस गूढ़ रहस्य को, जिसने समझा इस गूढ़ रहस्य को, जीवन का उसको सार मिला। जीवन एक बहती धारा है। ड.एस.आई जैसा इंस्टीट्यूट जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने में लगा हुआ है, और इसलिए आज जब इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो भगवत गीता का मंत्र, जो 15वें अध्याय का 12वां मंत्र था, जिसको कहा गया यदा दित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम, यचंद्रमासी मच्चाग्नो तेजेत्तो सिद्धि मामकम। वास्तव में ड.एस.आई का जब मैं कार्य को देखता हूँ, आपके टैक्सोनॉमी माने वर्गीकरण के विषयों को मैं देखता हूँ, जीवन के बहुत से रहस्यों को ड.एस.आई भी और बी.एस.आई भी वनस्पति के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो जीवन मिलता है, तो इसको जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये मेरे प्रकाश से है, उस प्रकाश को पाने की, उसको जानने की जो वैज्ञानिक भावना है, जो वैज्ञानिक इच्छा है,
उसको पूरा करने के लिए ड.एस.आई के साइंटिस्ट दिन और रात कार्य कर रहे हैं। लेकिन जीवन के इस प्रकाश को और जीवन चक्र को जानने के लिए उसको संजो कर रखना बहुत आवश्यक है। उसको अपने मूल्यों, अपने नॉलेज ज्ञान के साथ साइंटिफिक एटीट्यूड से उसका प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको जानते हुए इस रहस्य को पाने में हम अभी भी इस साइंटिफिक प्रयास के साथ लगे हुए हैं कि इसका अर्थ और इसकी विराटता क्या है, और इसलिए इसकी जो विराटता है उसको जानने के लिए एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी हमने तैयार करी है। लेकिन ये ज्ञान सबको सब जगह अच्छे तरीके से उपलब्ध हो, और इसके लिए हम लोगों को प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए जो ये सामयिक विषय जो आप लोगों ने अपने उद्घाटन में कहा, और उसके बाद जिस प्रकार से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम देश में ये चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक जो हैं उनका जो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो निरंतर का विषय मैंने बताया है, हमारे पास 17 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मैं ये मानता हूँ कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है। ड.एस.आई उसमें से एक है, ब.एस.आई उसके में से एक है, एफ.एस.आई हमारे पास एक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ड.आई एक है, साइकोन हमारे पास एक है, और उसके साथ ही साथ सालिम अली इंस्टीट्यूट हमारे पास एक है, हमारे पास देहरादून के जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है वो एक है। लेकिन ये जो 17 इंस्टीट्यूट हमारे डिपार्टमेंट के हैं, इसमें जो साइंटिस्ट लग रहे हैं वो आपस में अपनी नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को आगे बढ़ा सकें। आने वाले समय के जो 3 बड़े विषय चलते हैं, एक तो UNFCCC का जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के पूरा विषय चलता है, दूसरा लैंड डिग्रेडेशन को लेकर के विषय चलता है, और तीसरा जो दुनिया में कन्वेंशन चलता है वो बायोडाइवर्सिटी के विषय को लेकर के चलता है। लेकिन इन तीनों विषयों में हमारे जो 17 के 17 साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हमारी मिनिस्ट्री के हैं, वो आपस में कोलैबोरेट करते हुए हम दुनिया को आने वाले समय में पर्यावरण और विकास, इसमें साथ साथ हम कैसे चल सकते हैं। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी सेव कर सकते हैं, अपने लैंड डिग्रेडेशन को भी बचा सकते हैं, और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज में हम रिन्यूएबल एनर्जी की और भी अपने देश को ले जा सकते हैं। और इस सब को विषय को देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में COP26 में दुनिया को एक पंचामृत का विषय दिया था। भारत के नेट जीरो के 2070 के लक्ष्यों को तय करते हुए भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के साथ लेकर, और भारत की जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें हम किस प्रकार से अपने नई टेक्नोलॉजी को ला करके कमी ला सकते हैं, पंचामृत दुनिया के सामने दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने दुनिया को एक नया मिशन दिया है, और उसका नाम है लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के लिए हमारा मंत्रालय, हमारे साइंटिस्ट जुड़ते हुए एक नया एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के साथ साथ इस देश के, इस दुनिया के जीवन के रहस्यों को समझते हुए उस लाइफ के मंत्र के लिए हम लोग डेडिकेटेड होकर काम करें, और आने वाले समय में क्लाइमेट जस्टिस के नाते हम दुनिया के सभी लोगों को विकास की वो संकल्पना दें जहाँ पर्यावरण और विकास इस प्रकार से चले कि हम माइंडफुल कंजम्पशन की ओर जाएं, न कि माइंडलेस कंजम्पशन की ओर। और यही प्रधानमंत्री जी का लाइफ मंत्र है। इस सब विषयों में हमारे साइंटिस्ट जिस योगदान के साथ काम कर रहे हैं, देश हमारे साइंटिस्ट के योगदान को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है, आप पे गर्व करता है, और आपका ये साइंटिफिक इनोवेशन देश के आम आदमी के काम आकर के भारत को महान बनाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir, I'm sure our director, Dr. Banerjee, has taken a note of all that you have told, and I'm sure the knowledge will reach out to the people through whatever step needed will be taken. With this, we have actually come to the end of this session. So may I now request the honorable ministers and dignitaries to kindly take their seat in the pavilion among the audience as we prepare the stage for our cultural program, which is based on the theme, the Jivan Dhara, the flow of life. And sir,
We have also kept the vision of our Prime Minister, life, and all other things in mind and designed this cultural program. So just give us some time as we very quickly prepare the stage for the cultural program to begin. I request all the audience to kindly be seated. Can I request the event management team to kindly come on stage and clear the table and furniture for the cultural program? बहती धारा है, किसी सरिता के कलकल